Okay, good evening, everyone. Welcome to another CUET analysis session by Career Launcher. So, just like phase one, we have covered each and every day with the analysis of that particular day. So, in the first phase, all the days 15th, 16th, 19th, and 20th, we had done an analysis. Uh, we are coming back for the second phase again. Yesterday was there was a lot of glitches in the CUT examination. The second slot has completely been cancelled at all the centers, so we couldn't been able to come up with the analysis. Today we are back again with the analysis, and today is a very interesting day for us as well for Career Launcher because these analysis sessions used to be hosted by none other than Amitendra sir, who is my colleague, and today he's the table has turned, and he's the CUT taker today. He has given the examination at one of the center, and he'll be sharing his experience. So it's like the other way around. He used to ask everyone, how was the experience. Now today I got a chance to ask him how was the experience. So welcome, Amitendra sir. And see, we have been listening to technical glitches. There are a lot of hiccups that students are facing during the examination. Yesterday was a total washout on the second slot, and plus slot also there will be a lot of complaints. And today also in the news we have been, and when we are talking to student, we have been encountering incidents where there are a lot of technical glitches today as well. So, what was your experience altogether? Please sum up how the examination happened, and did you also face any difficulties? And what was the reaction of different invigilators, students, whatever you wanted to share with us. Okay, thanks, Himanshu. Yes, I would agree to the fact that the tables have turned, and it's good to be on this side of the table actually. So, but yeah, I think to all those students who are watching this session or who probably would be watching it later, here are a few things I think they need to be careful about. I think every student should go with an expectation that I'll definitely have a technical glitch. You are lucky if you don't have one. We praised NTA on the third and fourth day, and they did a good job on the third and fourth day of the phase one actually. Yesterday, as you mentioned, there was a complete washout at many of the locations, especially in Delhi NCR, first slot, second slot. In fact, I was talking to the people outside my country today. They said that yesterday also the second slot could not be done actually at that particular location. And I'm talking about, without naming the center, I'm talking about it. It's one of the most reputed engineering colleges in North Okay. India. That was my center. They are the university. They are also participating in CUET for their own admission. I wasn't expecting, at least with the kind of infrastructure they had, I was not expecting that we'll be facing any issues. But we can't blame the center. As I would say, the issue mostly happening is from the NTA end, actually, I believe. टुडे वाज नो डिफरेंट और जो हमने फर्स्ट 2 दिन इनकाउंटर किया था फेज 1 में, वही कहानी आज फिर रिपीट हुई है. कल भी हुई थी, आज फिर रिपीट हुई है. एग्जाम ऑलमोस्ट 75 मिनट्स लेट शुरू हुआ सेकेंड स्लॉट का हमारा, क्योंकि द सिस्टम कुड नॉट बी कनेक्टेड टू द सर्वर. किसी भी बच्चे का सिस्टम कनेक्ट नहीं हुआ सर्वर से. And the invigilator were of no help actually, to be very frank. While they should have been, at least for the technical issues, but they were not giving any communication कि हाँ क्यों हुआ, क्या हुआ. स्क्रीन पे लिखा आ रहा था सर्वर से कनेक्ट नहीं हो पाया है, इसलिए एग्जाम डिले है. Suddenly somebody comes and says अब चेक करो हो जाएगा. तो it was already 75 minutes over actually by that time. You don't have any watches, nothing. They keep everything. They don't allow you to take anything, including your belt as well. If you are आप जो भी मेल स्टूडेंट्स हैं वो उनको बता देता हूँ, बेल्ट भी मत पहन के जाना. बेल्ट भी उतरवा दिए जा रहे हैं सेंटर्स पे. सो छोटी छोटी चीजें हैं जिनको ध्यान रखना है. मेरा सजेशन होगा एडमिट कार्ड, सैनिटाइजर, मास्क, पेन के अलावा कुछ भी मत लेके जाओ. अपना एक्स्ट्रा 2 फोटोग्राफ एक्स्ट्रा कैरी करो और आईडी प्रूफ. इसके अलावा कुछ भी मत लेकर के जाओ. नथिंग इज अलाउड. बट इट इज रियली डिसहार्टनिंग, हिमांशु, व्हाट आई वुड से, कि आप 10 लाख बच्चों का फ्यूचर के बारे में आप बात कर रहे हैं. आप 10 लाख स्टूडेंट्स जो एग्जाम लिख रहे हैं, आप उनके साथ इस तरीके का मजाक नहीं कर सकते हैं. मतलब ये उनके फ्यूचर का सवाल है, उनके करियर का सवाल है. ऑल ऑफ देम आर लुकिंग फॉरवर्ड टू एडमिशन इन टॉप कॉलेजेस ऑफ द कंट्री, टॉप यूनिवर्सिटीज ऑफ द कंट्री. आपके जो एग्जाम ग्लिच है, ठीक है, आप उसको
कंपनसेट कर रहे हो एक्स्ट्रा समय दे करके, जितना समय वहां पे लगता है उतना ही समय में पेपर कंप्लीट हो रहा है. बट द काइंड ऑफ मेंटल एग्नी अ स्टूडेंट गोस थ्रू इन दैट पीरियड, आई थिंक यू कांट कंपनसेट दैट. जो मेंटल प्रेशर उसके दिमाग पे आ रहा है, आई एम रिकॉलिंग एन इंस्टेंस इन माई रूम इटसेल्फ. स्टूडेंट का बार बार डिस्कनेक्ट हुआ सिस्टम, और मेरे सामने अभी उसका फिफ्थ पेपर होना था. ही हैड 5 पेपर्स टुडे. मैं निकल गया हूँ से अपने रूम से, तब तक उसका फिफ्थ पेपर वो लोग स्टार्ट नहीं कर पाए. फोर्थ पेपर के 30 मिनट्स अभी बचे हुए थे. मतलब वो सब कुछ सही भी हुआ होगा तो वो शायद अभी उसका पेपर फिनिश हुआ होगा. इमेजिन द पेपर विच वाज सपोज टू गेट ओवर एट 6:45. सो आई थिंक इट्स हाई टाइम एनटीए शुड लुक इनटू ऑल दिस. एग्जाम कैंसिल होना अलग चीज होता है, सर्वर एरर्स होना अलग चीज होता है, बट आपको ये चीज समझनी होगी कि 10 लाख बच्चों का फ्यूचर स्टेक पे है. तो उसको ध्यान में रखना पड़ेगा इन लोगों को. अदरवाइज तो मेरा एडवाइस है, हर स्टूडेंट जो अभी वॉच कर रहा है इस सेशन को, गो विद द माइंडसेट. अगर आपके एग्जाम्स अभी बाकी हैं तो आप गो विद द माइंडसेट कि शायद मैं भी इनकाउंटर करूंगा. नहीं होता है, यू आर लकी वन. अदरवाइज आई डोंट थिंक कोई ऐसा लोकेशन है जहां पे इश्यूज नहीं हो रहे हैं. जब इतने अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर वाले यूनिवर्सिटी में प्रॉब्लम है, तो ये आई थिंक एनटीए के बैकएंड पे है और उनको इस चीज पे ध्यान देना पड़ेगा. Very, very true, sir. Because when you go for an examination, you go with a certain mindset, and when these kind of glitches and things happens, it kind of there are chances कि आप पूरा ही mindset आपका different level पे चला जाए और आप जो पढ़ के भी आए हो उस हिसाब से आप शायद ना कर पाओ. So it is a it is a good advice to all of us that we should set our expectation right. We should have this thing in mind that this could happen. This is happening from last 2 days. So probably we should completely have this in mind ki, if something this kind of happen, we should not kind of bog down, or we should make sure that we are equally concentrated on what our goal is at that particular time. Yes, sir. इनफैक्ट दिस रिमाइंड्स मी हिमांशु, जो आज इंसिडेंट हुआ, मेरे बगल में जो स्टूडेंट बैठा हुआ था, उसका सोशियोलॉजी का पेपर था. फर्स्ट पेपर उसने Okay. जो भी था सब्जेक्ट उसने कंप्लीट किया. सेकंड उसका सोशियोलॉजी का पेपर था. एंड ही went to the invigilator, spoke to them. They could not help him. While it could be a technical reason, but I think इतनी ट्रेनिंग तो आपको इन्विजिलेटर्स को देनी होगी. उसके सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट का पेपर होना था और उसके सोशियोलॉजी हेडर आया उसके स्क्रीन पे, बट जो 50 क्वेश्चंस आए वो सारे साइकोलॉजी के थे. Oh my वो God. सारे साइकोलॉजी के थे. तो आप इमेजिन करो उस स्टूडेंट पे क्या बीती है. तो दैट इज वेरी Okay. वेरी इंपॉर्टेंट. And कि मतलब invigilators were आप not able to help, or नॉट they एट were ऑल. not. मतलब फर्स्ट जो रूम में विजिलेटर थे, पहली बार जब उसने बोला तो उसने इग्नोर कर दिया. इसके बाद कुछ बच्चों के टेक्निकल इश्यूज को रेक्टिफाई करने के लिए जो सीनियर इन्विजिलेटर्स आए, तो देवर लाइक कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया. ही टोल्ड देम कि मैंने अभी जैसे ही पेपर स्टार्ट हुआ था तभी बताया था, बट नोबडी इज टेकिंग इंटरेस्ट. So finally they came back to him when only 2 minutes were left. He was asking again and again. So finally they came back and said, "आप एक काम करो, आप एनटीए को मेल लिख देना." This is the kind of approach. I don't know how NTA will help the kid, बट अगर आप सोशियोलॉजी का पेपर है तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि मैं तैयारी करके गया हूँ तो मेरे क्वेश्चन उसी सब्जेक्ट पे आए, और आपको साइकोलॉजी के सारे क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहे हैं. सो आई थिंक Nothing ये can fix it. अनएक्सेप्टेबल चीजें हैं. मतलब ये Exactly. इसको हम टेक्निकल इशू नहीं बोल सकते हैं. ये मतलब इस बड़े लेवल पे उस समय की बात कर रहे हैं जब पिछले वीक गवर्नमेंट ने 5G बैंड का ऑप्शन कर दिया. हम 5G Yes, sir. टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं और हम एक ढंग का एग्जाम नहीं कंडक्ट कर सकते. But you can't have any excuse for this. मतलब NTA, it's really disappointing. I must say. And, and sir, so you said to 75-minute late paper start हुआ. So then, did you get the complete time Yes, for afterwards once the paper every started? सब्जेक्ट द टाइम वाज नॉट एन इशू. अगर बीच में हमारा Okay. बीच में सर्वर से डिस्कनेक्शन दोबारा हो गया था, 10 मिनट का लॉस हुआ था. बट वो पेपर जब स्टार्ट हुआ, रीस्टार्ट हुआ, तो वहीं से स्टार्ट हुआ जहां पे बंद हुआ था. तो वो इशू नहीं है. मतलब यू गेट दैट Okay. टाइम, यू गेट फुल 45 मिनट्स फॉर योर सब्जेक्ट. Okay. 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 Great. So you were saying that even after the paper started, then also you had faced issue in between यस. the. यस. Okay. Okay. Great. Great. Okay. So what I'll do, how we go about this. So I have spoken to a lot of students who have given the examination today. So I'll be covering the analysis of the English and the GT part, and then probably I'll come back to you for domain subjects which you have given today.
Okay, so all of you who are watching, the paper again today is almost on the expected line. There were a lot of direct questions. So if we talk about the English language paper, the focus was on vocabulary and grammar. Okay, there were 15 questions based on reading comprehension, and they are again mostly based on your grammatical fundamentals and vocabulary. Okay, so there was synonyms question, antonyms question, fill in the blanks, one word substitution, spelling error, figure of speech, para. Overall, the paper was easy, and the student can comfortably complete the same in the allotted 45 minutes. So it was in the same, almost same line that we are seeing in last few days. Last few days of the examination. The general test, again, the general awareness section has a less number of questions from current affairs. There will be more question asked on static knowledge. Your awards, books, authors. We are seeing this also in in the 19th and 20th slot. So personalities, awards, books, authors. These are being asked. The mathematics section have again very basic question. If you have practiced well, you will be able to find out the answers very easily. There'll be 4 5 questions based on percentage. Then there'll be ratios, number system, time distance, speed. So usually you have very easy to moderate questions. There'll be set query, passage question, a couple of questions also asked from geometry. There were 3 4 questions from series, coding, and direction. So these are reasoning questions. Okay. So and there was one questions from the dice and mirror images. So overall, the GT and English, it's on the same pattern that we have been saying from last few days. So it's on the same line. For GT, again, we have been saying this from a in all the analysis that practice is extremely important. You make sure that you attempt a lot of questions, go through the NTA sample marks that has been given. So mostly you'll be covered in that. Okay, and the questions are coming very direct, very easy. You just need to make sure that you have a hang of time, and you'll be able to pass through into these two. Now let's come back to domain. So sir, just I believe you have given legal paper today, and then you know one paper that you have given which we have not covered in our analysis till now is Hindi, I guess. Yeah, सो दैट वाज please walk दैट us वाज through. डेलिबरेट एक्चुअली. सो मैंने जानबूझकर हिंदी रखा था क्योंकि कोई भी हिंदी के बारे में बात नहीं कर रहा था. एंड Exactly. आई नो कि 2 लाख बच्चों ने इंडिया में हिंदी को सेलेक्ट किया था एज लैंग्वेज एक्चुअली. जी जी तो जब मैंने सेलेक्ट किया था तो मुझे उम्मीद थी कि हिंदी इंग्लिश के बाद मोस्ट प्रेफर्ड लैंग्वेज होगा, स्पेशली कंसिडरिंग नॉर्थ इंडिया. तो मैंने जानबूझकर वो रखा था. सो वेरी सिमिलर टू इंग्लिश का जो एक्सपीरियंस रहा है बच्चों का, मतलब जो इंग्लिश का जिस तरीके से पेपर आता है, हिंदी लैंग्वेज का पेपर भी वही है. सो मेरे आज का जो पेपर था उसमें 3 पैसेजेस थे. एक भारतीय धर्म नीति के ऊपर था. एक बड़ा इंटरेस्टिंग पैसेज था कि जो शू लेसेस होते हैं वो उसके पीछे साइंटिफिक रीजन होता है. शू लेसेस बांधने का उसके पीछे साइंटिफिक रीजन Okay. होता है. तो उसके पीछे का जो Okay. विज्ञान है उसके बारे में उसमें बात किया हुआ था. बड़ा इंटरेस्टिंग था. और एक दूसरा तीसरा जो था वो भी काफी इंटरेस्टिंग था. एक गुलाब के फूल के व्यथा के बारे में कि मतलब मैं खुशबू फैलाता हूँ लेकिन मेरे ऊपर कांटे लगे हुए हैं. तो इसके ऊपर था. बट अगर जैसे इंग्लिश में हम बात करते थे कि पैराजम्बल्स आ रहे हैं, तो काफ़ी पैराजम्बल्स एटलीस्ट 4-5 क्वेश्चंस थे जो यहाँ पे थे, जिनमें जो भी वाक्य दिए हुए थे उसको क्रम अनुसार जो उन्होंने बोला था उसको लगाना था. तो बेसिकली पैराजम्बल्स ही था वो. आपका जो हम हिंदी में एक्सपेक्ट करते हैं कि पर्यायवाची शब्द आएंगे वो आए. 4-5 प्रश्न ऐसे थे जो पर्यायवाची शब्द वाले थे. विलोम शब्द ऑपोजिट मीनिंग जो एंटोनिम हम बोलते हैं वो पूछे गए थे. इसके अलावा मुहावरों के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए. तो बहुत सिंपल. मतलब मैं स्कूल और आज की बात करूं, 27 साल का फर्क है. 27 साल हो गए तो भी मैंने काफी एंजॉय किया इस पेपर को. तो मतलब हिंदी का पेपर ऐसा लगा कि मतलब अगर कुछ सवाल छोड़ दिए जाए तो शायद मैंने 30-35 से ऊपर तो किए हैं. तो मतलब पेपर बहुत ही इंटरेस्टिंग था. मुझे नहीं लगता है कि किसी को उसके लिए आज भी हिंदी पढ़ने की जरूरत थी. आप आराम से 30 क्वेश्चन कर सकते थे, जो अगर आपको थोड़ा बहुत भी आपने स्कूल में सीरियसनेस रखा होगा, आपका हिंदी अगर सब्जेक्ट रहा होगा. अलंकारों के ऊपर काफी काफी प्रश्न थे. मतलब मुझे लगता है 7 से 8 प्रश्न ऐसे थे जो अलंकार के ऊपर थे. तो जो हिंदी से एग्जाम लिख रहे हैं, जो हिंदी वाले जो स्टूडेंट्स हिंदी का जिनका लैंग्वेज है वो बिल्कुल निश्चिंत होकर के जाए. पेपर आसान आ रहा है. इनफैक्ट एक चीज जो कॉमन है मुझे लग रहा है कि हर पेपर आसान है.
हर सब्जेक्ट का पेपर आसान है। वो स्ट्रैटेजिकली जो भी रीजन है उसके पीछे, बार बार वो बोल रहे थे कि पेपर आसान होगा, तो पेपर को आसान ही रखा जा रहा है। चाहे वो लैंग्वेज का पेपर हो, चाहे वो सब्जेक्ट्स के पेपर हो। मैं कॉमर्स का स्टूडेंट नहीं हूँ। आई अटेम्प्टेड अकाउंट्स एंड बिजनेस स्टडीज टुडे, और आप बिलीव नहीं करोगे हिमांशु, बिजनेस स्टडीज के जो क्वेश्चंस थे, मुझे नहीं लगता है कि मुझे रिक्वायर्ड था क्लास 12th में बिजनेस स्टडी पढ़ने का। स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, जो प्लानिंग है, डायरेक्शन है, ये सब जो थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस स्टडीज के सारे क्वेश्चन थ्योरी के ऊपर बेस्ड थे। इसके अलावा बिजनेस स्टडीज में मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी के ऊपर क्वेश्चन आया था। तो जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो अगर किसी भी स्टूडेंट ने अपना एनसीईआरटी बुक अच्छे से कवर किया है, तो मुझे लगता है कि शायद ही कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जो वो मजबूर होंगे छोड़ने के लिए। वो चाहेंगे कि 50 का 50 अटेम्प्ट मिल जाए, ना कि सिर्फ 40। तो जो बिजनेस स्टडीज का पेपर था, मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ कि जो भी चैप्टर्स है, इक्वल, ऑलमोस्ट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रहा है। आपको थ्योरीज के, मैनेजमेंट थ्योरीज के ऊपर क्वेश्चंस थे। मैस्लो के नीड थ्योरी पे तो क्वेश्चन था ही, और वो उसको पांचों स्टेजेस के ऊपर ही बताना था कि मतलब करेक्ट ऑर्डर क्या है। इसके अलावा अगर आपको बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो उसके लिए अगर आप हायरिंग कर रहे हैं, तो उसका प्रोसेस क्या होगा, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, वो जो क्राइटेरियाज हैं, कौन सा स्टेज पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा, इसके ऊपर क्वेश्चंस थे। इसके अलावा सिमिलरली कंट्रोलिंग को लेकर के काफी सारे क्वेश्चंस थे, डेविएशन को लेकर के काफी सारे क्वेश्चंस थे। तो ओवरऑल एक बहुत ही स्टैंडर्ड पेपर बनाया उन्होंने, और आई थिंक इसको अप्रोच बहुत सिंपल है कि सारे चैप्टर्स को ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज दिया जाए, ताकि बच्चे को कोई परेशानी ना हो। क्वेश्चंस पूरे इजी थे। एनसीईआरटी गुड इनफ है किसी भी स्टूडेंट के लिए। अकाउंट्स की भी अगर मैं बात करूं, तो कहानी बिल्कुल वही थी आज की। अकाउंट्स में प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के ऊपर क्वेश्चन था। इनफैक्ट अकाउंट में 22 न्यूमेरिकल्स थे आज के पेपर में। आपको जिसमें प्रॉफिट निकालना था, डिबेंचर्स के ऊपर क्वेश्चन थे। मतलब, लेकिन 22 न्यूमेरिकल्स थे, इजी थे। डेटा सामने दिया हुआ था, आपको सिंपल कैलकुलेशंस करने थे। एक चीज जो मैं कहना चाहूंगा, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं सारे स्टूडेंट्स के पेपर कितने आसान आ रहे हैं, कि मतलब हर स्टूडेंट रेस्टलेस हो रहा था कि नेक्स्ट सब्जेक्ट पे मूव किया जाए। हर स्टूडेंट मेरे रूम में, एंड आई इंटरेक्टेड विद लॉट ऑफ देम, सम ऑफ हैव गॉट 99.6%, 99% in class 12 boards, so we can very well say they were well prepared for the examination. boards बहुत अच्छा करके आए हैं, तो उनके theoretical concepts बहुत अच्छे हैं। And these kids were getting restless. I was getting restless for a different reason, but these kids were getting restless कि पेपर 20 मिनट में खत्म हो जा रहे थे। 40-45 मिनट के समय की जरूरत ही नहीं थी, 20 से 25 मिनट मैक्सिमम किसी का गया। फाइनली लीगल स्टडीज था मेरा, मतलब वैसे तो मैंने फर्स्ट उसको किया था। तो जो स्टूडेंट्स लीगल स्टडीज का पेपर देने वाले हैं, उनके लिए भी सिर्फ यही कहूंगा कि जो लीगल स्टडीज का जो सीबीएसई का बुक है, जो पीडीएफ आपने देखा होगा, अगर आपके पास बुक नहीं है, तो जो सीबीएसई का करिकुलम है, बस उसको फॉलो करो। वो सातों यूनिट्स अच्छे से कवर कर लो। कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर क्वेश्चन था, एडवोकेट्स एक्ट के ऊपर क्वेश्चन आए थे। जो क्रोनोलॉजी ऑर्डर है डिफरेंट एक्ट्स का एडवोकेट्स के रिलेशन में, वुमेन्स कब अलाउड हुई थी, फीमेल्स कब अलाउड हुई थी प्रैक्टिस करने के लिए इंडिया में, तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के क्वेश्चन पूछे गए थे। कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स, जो मैंने अपने सेल्फ पेस वीडियो में भी कवर किया जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था, तो आप उसको अच्छे से कवर कर लो। क्रिमिनल लॉ का कोई भी क्वेश्चन नहीं था आज, लेकिन टॉर्ट लॉ के ऊपर क्वेश्चन था, कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर क्वेश्चन था, एक्ट्स को लेकर के कुछ आर्टिकल स्पेसिफिकली जिनसे काफी क्वेश्चन पूछे गए थे। आर्टिकल 19, आर्टिकल, मुझे क्वेश्चन गलत भी लगा उसमें आर्टिकल 19 को लेकर के। आर्टिकल 19, 20, 21, 24, 338, 39A, these were some of the very specific articles from which questions were there. इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड थे। सिंपलेस्ट, इससे ज्यादा सिंपल मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूँ कि कोई भी लीगल मैक्सिम पूछा जाएगा। उन्होंने पूछा था कि किसको हम फ्रेंड ऑफ द कोर्ट बोलते हैं, एमिकस क्यूरे होता है। तो ये इससे आसान कुछ नहीं हो सकता है। तो आई थिंक, मुझे नहीं लगता इससे आसान लीगल का कोई क्वेश्चन हो सकता है। तो ये पूछा गया था। आई थिंक नटशेल में अगर मैं बात करूं, जो 4 पेपर्स मैंने आज दिए, कॉमर्स के 2 थे, इसके अलावा लैंग्वेज में हिंदी था, और इधर लीगल स्टडीज का, एक चीज क्लियर है, सारे स्टूडेंट्स एनसीईआरटी अच्छे से रिवाइज करो। एनसीईआरटी के बियॉन्ड कुछ भी नहीं पूछा जा रहा है। कॉन्सिक्वेंसेस मैंने पहले भी बताए थे, फर्स्ट 4 डेज में हाई कट ऑफ्स होंगे, 100% कट ऑफ होंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत सारे कॉलेजेस के लिए।
बट दैट इज समथिंग यू शुड नॉट वरी अबाउट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. इस समय तुम्हारा जो ऑब्जेक्टिव है वो पेपर को अच्छे से करके आना है, और उसके लिए बेस्ट तरीका है एनसीईआरटी पूरा अच्छे से रिवाइज करो. दैट इज व्हाट आई वुड से. Sure, sir. Sure. Thank you so much, sir, for your advice. So we have been listening to this. There are usually direct questions that being asked. The questions difficulty level is easy. On the easier side. But in terms of options, are they like very clear options, and you are able to get the answer very quickly, or there sometimes it happens that questions are easy, but they kind of give very close options so that you kind of become confused sometimes. So how was it? या नहीं, ऑप्शंस कंफ्यूजिंग कुछ भी नहीं है. मतलब मुझे नहीं लगा कोई भी Okay. ऑप्शन कंफ्यूजिंग है. एटलीस्ट फॉर लीगल स्टडीज तो मैं जानता हूँ, आई टीच दैट एज वेल. सो देयर वाज नथिंग कंफ्यूजिंग. आप आराम से ऑप्शंस देख करके सॉल्व कर सकते हो, आपको पता लग जाएगा. हिंदी में भी मैंने ऑब्जर्व किया, अगर आप थोड़ा भी कंफ्यूज हो रहे हो क्वेश्चन को लेकर के, तो आप ऑप्शन देखो, ऑप्शन से आपको आंसर मिल जाएंगे. सेम हैपेंड विद बिजनेस स्टडीज. आई एम नॉट अ कॉमर्स गाय, बट बिजनेस स्टडीज मैं आई एंजॉयड दैट पेपर. आंसर्स जो ऑप्शंस थे उससे ही सब पता लग जा रहा था कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहे हैं वो लोग. सो इनफैक्ट वी हैव अ कपल ऑफ क्वेश्चंस. हिमांशु, विल कम टू दैट. मैथ्स हम बात करते हैं, हिस्ट्री आपके पास फीडबैक है आई थिंक, तो हम बात करते हैं उसके हाँ जी. ऊपर. दिस क्वेश्चन या हैज कम कि एनी क्वेश्चंस फ्रॉम कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग. यस, देयर वर 5 क्वेश्चंस फ्रॉम कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग. आई रिमेंबर अ कपल ऑफ देम. एमएस एक्सेस का यूज क्या है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था. इसके अलावा पाई चार्ट में कितने, पाई चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन था कि पाई चार्ट में कितने, आई थिंक पाई चार्ट में कितने आप इंसर्ट कर सकते हो, इसको लेकर के क्वेश्चन था. कुछ पैरामीटर्स को लेकर के क्वेश्चन था. तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के टोटल क्वेश्चन आए थे. अगर इफ आई रिमेंबर करेक्टली, मैंने पिछले एनालिसिस में भी आपको स्टूडेंट्स फीडबैक के थ्रू बताया था, मिनिमम 3 to 4 क्वेश्चंस कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग से आ ही रहे हैं. While I did not give the pole science exam, science exams and all, but I had a good look at the pole science paper today, thankfully, because of the students sitting in front of me. So I can definitely give you that feedback. Chronology is something you should be prepared for. Chronology बिल्कुल याद कर लो. जो important events हैं, important bodies को याद कर लो जितने भी हैं. They had questions on CENTA, they had questions on United Nations, they had questions on India-Pakistan issue. कौन कौन से इश्यूज हैं, मेजर इश्यूज हैं जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हैं, तो इन सब के ऊपर क्वेश्चन था. इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आईएमएफ का क्वेश्चन था, वर्ल्ड बैंक के ऊपर क्वेश्चन था पॉलिटिकल साइंस के पेपर में. इसके अलावा दे हैड क्वेश्चंस ऑन आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स बॉडी के ऊपर क्वेश्चन था. So and also about some theoretical theories, basically some philosophies. बट क्रोनोलॉजी को लेकर के क्वेश्चंस थे आज के पेपर में भी, वो एक्सपेक्टेड लाइंस पे ही थे. जिसमें मतलब कौन सा इवेंट पहले अनफोल्ड हुआ. वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. व्हाइल आई डोंट नो द आंसर, बट वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एक्चुअली, आई वुड से, कि वो कौन से कांग्रेस प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, जिन्होंने उस समय के प्राइम मिनिस्टर को ही कांग्रेस से निष्कासित कर दिया था, निकाल दिया था. So this was Okay. also in political science. So easy. I found it to be very easy. But I had a good look at it. It was not my paper, but I had a good look at it, and I found that to be very easy. All the terms are familiar. Center, yeah, IMF, World Bank. I think you come across all this. इनके roles क्या है, ये सब आपको पता है. इंडिया पाकिस्तान के बीच में क्या issues हैं, ये आपको पता है. तो वेस्ट एशिया को लेकर के था. फिर नाटो में, नाटो इज प्राइमरली ऑफ कंपोजिंग ऑफ विच कंट्रीज, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे, मतलब विच पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट. तो आई थिंक द पेपर्स वर वेरी वेरी इजी एक्चुअली. सो नॉट एन इशू. Exactly. Exactly. So, so in my discussion also, the Paul science paper, it's the same thing. So regional aspiration पे questions थे India Park और ये इन सब पे. Then you have one interesting aspect that I could gather from the students is that almost close to 60 to 70 paper came from the second political science book. Okay, usually in most of the subjects they have been able to balance it out. But today's political science paper, this is something that I get from the student that most of the questions, almost 65 to 70% comes from the second book. There were match the following based questions from globalization, social movement, but it is in the expected line, the kind of NTA mock paper that we have seen, sample mock paper, it is on the same line, again direct question, easy question.
If we talk about history, it has a mixed reaction, and it has been happening from last. We have been seeing this because history usually it's a lengthy paper. So students, some of the students are finding it lengthy, so maybe it's on a little difficult side for them. But otherwise, again, direct question, almost on the same pattern that we have seen in the mocks, or in the previous days. So that's about what we could gather about the the humanities part. So sir, Okay, on in terms mathematics, of yeah, please. okay, I have a feedback from mathematics, Himanshu, and students are asking about that. Great. So it's not about the core mathematics, but I do have feedback about the applied mathematics. So I hope everybody is aware that the first 15, which is based on the common syllabus of core and the applied mathematics, is compulsory, and out of the remaining 35, one has to pick 25 questions from either of the two, applied or core mathematics. So applied mathematics, because the center I was giving exam, almost every student I interacted with, they had applied mathematics. Easy paper, took some time for calculations, but that's how it has been from day one, mathematics, and we expect calculations to be done to reach out to the answer. But if you talk about the questions were from derivatives, questions were from the boards and streams. जो भी हर टॉपिक से यूजली 2 से 3 क्वेश्चन आए, डेरिवेटिव्स के कुछ 4-5 क्वेश्चंस थे, बट ऑलमोस्ट हर टॉपिक से। सो जो बिजनेस मैथ्स का जो पेपर है उसमें बोर्ड्स एंड स्ट्रीम पढ़ाया जाता है। जो जो आपका इसके अलावा जो ज्योमेट्री का जो पार्ट है, वो उसके ऊपर कुछ कुछ क्वेश्चंस थे, कपल ऑफ देम, नॉट बहुत ज़्यादा नहीं था, बट डेरिवेटिव्स के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस आए, रेशियोज के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं। फंक्शंस के कुछ क्वेश्चंस थे, बहुत ज़्यादा नहीं थे। तो मोर और लेस मैथ्स स्टूडेंट्स फाउंड इट अ लिटिल टाइम टेकिंग, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था, बट दैट्स हाउ यू एक्सपेक्ट द मैथ्स पेपर टू बी, अनलाइक द अदर पेपर्स वेयर मोर ऑफ थ्योरी इज देयर. Unfortunately, at my location as well, we didn't have much student, I believe, because I couldn't find anybody from physics and chemistry or bio talking about that actually. And not from our end as well. We connected to a lot of students. इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे एक्सपेक्टेड था 4-5 क्वेश्चन आएंगे, तो वहाँ पे वो क्वेश्चंस पूछे गए थे। ओवरऑल सिमिलर लाइंस पे बिल्कुल भी डेविएशन नहीं है। जो फर्स्ट 4 डेज की स्टोरी थी इकोनॉमिक्स की, आज भी वही रही। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे 4-5 क्वेश्चन पूछे गए। इसके अलावा आपके जो थ्योरेटिकल नॉलेज था, डेफिनेशंस के इर्द गिर्द काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे, कुछ थ्योरीज के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए, कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, कपल ऑफ देम। तो ओवरऑल मतलब इफ आई टॉक अबाउट द पेपर्स हैव बीन वेरी वेरी easier, and students were happy except for those technical part. We are also getting that feedback in the chat box. In Maharashtra they had technical issues today. I think this is common to across the country, and I would say you are lucky if you didn't face any technical issue at your location. Otherwise, it's what one of the members, one of the audience member is saying, insane. I completely agree to her. It's definitely insane. Definitely insane. Uh, Please, science ka paper analysis. Unfortunately, what I said, we don't have enough information, and I won't be talking about that without. Nobody is talking about, because अभी science पूरी तरीके से start ही नहीं हुआ बेटा. Hopefully, from day after tomorrow, we'll expect more of the science students taking the examination. Because when I was interacting today with the kids, most of them were writing their second slot. Second means फर्स्ट स्लॉट पहले या सेकंड स्लॉट पहले, जो भी हो गया था। आज वो दूसरी बार पेपर देने आए थे, तो कॉमर्स ह्यूमैनिटीज का स्ट्रेंथ ज़्यादा था। तो होपफुली जो लॉट आएगा 7th ऑनवर्ड्स, जिसके एडमिट कार्ड अभी होपफुली कल रिलीज होंगे, आई थिंक I expect them to have more of the sciences stream students coming up to take the paper now. And hopefully we'll be covering that once we have those science Yeah, students start giving the definitely. examination. Sure. So one, before we wrap up, we have covered this in our previous analysis, but I again would like you to, just tell the, basic do's and don'ts. We already have an video also. So all of those who are watching, I would really recommend you to join the YouTube channel of Career Launcher CUET. We have been doing a lot of videos related to the examination attempting tips. So we have done a do's and don'ts video, but in a summary, if you can just cover up,
how they should attempt the paper. What is your take on that? What are few basic things that can help them out? So if you can just cover that up Sure. again. Thanks, Himanshu. In fact, I would be gladly doing that. But before that, to all the people who are aspiring for Delhi University has released the criteria for tiebreaker. And please expect the cutoffs going to be very, very high, and a lot of students would be on the same score. They are expecting ties, and I'm expecting a lot of ties. Today I had a first hand experience. पेपर बहुत आसान आ रहा है, तो कट ऑफ्स बहुत हाई जाएंगे, कट ऑफ्स मैच करेंगे, बच्चों के स्कोर्स मैच करेंगे, बहुत ज़्यादा संख्या में टाई होगा। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इसको सॉल्व करने के लिए टाई ब्रेकर सिस्टम अनाउंस कर दिया है, एंड आई डिड अ वीडियो ऑन दैट ऑलमोस्ट 10 days ago. Many students said कि it's a fake, there is nothing official, but day before yesterday all the media houses have published the same. अगर दो स्टूडेंट सेम कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सेम कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और कोर्स उनका टाइड है सीयूटी का, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी विल फर्स्ट लुक एट योर best three subjects performance in boards. If there is a tie, best four. If there is a tie, best five. And finally the age. Now it is official. मैंने 10 दिन पहले इसके ऊपर वीडियो किया था, अब ये इंफॉर्मेशन ऑफिशियल हो चुकी है. So that's about it. Coming back to the do's and don'ts, I think it all starts with having that right mindset. जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, go with the mindset कि uh, you might be that unlucky one, or I am not hesitating on this. I'm definitely putting the onus on NTA कि प्लीज इसको ध्यान में रखो. 10 लाख बच्चों का फ्यूचर आपको ध्यान देना है, स्टेक पे है. If this continues, I think they have to seriously look into this. They have to seriously look into this. So as a student, I would expect myself to be mentally prepared to go with a thought कि शायद मैं वो अनलकी हूँ जिसका शायद आज ग्लिचेस फेस करने पड़ जाएंगे. अभी भी स्टूडेंट्स लिख रहे हैं कि 20 मिनट्स ही टाइम मिला पेपर करने का. सो दैट्स हाउ आई वुड गो. सेकेंड इज डोंट कैरी एनीथिंग एक्स्ट्रा, क्योंकि वहां पे फिर तुम्हें टेंशन हो जाएगा कि इसको कहाँ रखें, किसको दे. पेरेंट्स अगर तुम्हें छोड़ करके इधर उधर चले गए तो फिर उनको ढूंढना पड़ेगा. द ओनली थिंग यू शुड कैरी इज दैट प्रिंट आउट ऑफ द एडमिट कार्ड अलॉन्ग विद द डिक्लेरेशन फॉर्म. इसके अलावा एक ट्रांसपेरेंट पेन, सैनिटाइजर, 2 एक्स्ट्रा फोटोग्राफ्स. एक फोटोग्राफ चिपका कर ले जाना एडमिट कार्ड पे, और एक फोटोग्राफ हाथ में. अगर आधार कार्ड पे ईयर ऑफ बर्थ नहीं है तो क्लास 10th का मार्कशीट जरूर कैरी करो. दैट इज इंपॉर्टेंट. दे हैव बीन आस्किंग फॉर दैट. डेट ऑफ बर्थ मस्ट इंक्लूड ईयर ऑफ बर्थ. इफ योर आधार कार्ड इज क्वाइट ओल्ड, व्हेन यू वर बोर्न, उस समय जब बना था, तो उसको नहीं चेंज कर सकते हैं, तो डेट ऑफ बर्थ कैरी करो साथ में, विच इज थ्रू योर क्लास 12 और क्लास 10th मार्कशीट. इसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा कैरी मत करो. ऑल दी बॉयज डू नॉट इवन वेयर बेल्ट वेट. कुछ नहीं पहन के जाओ, बेल्ट भी उतरवा देंगे वहां पे. डोंट कैरी पाउचेस टू कीप योर स्टेशनरीज. दे विल नॉट कीप ट्रैक ऑफ दैट. आप सिर्फ पेन अलाउड है अंदर लेकर के जाना. यस, शूज यू कैन वेयर, बट डोंट वेयर शूज. शूज के ऊपर इंस्ट्रक्शन एडमिट कार्ड पे ऑलरेडी है, तो हेवी बूट्स वाले शूज पहन के मत जाना. बी एज लाइट एज पॉसिबल, एज कंफर्टेबल एज पॉसिबल. Don't carry anything extra for which you'll have to look forward to your parents once again कि उनको hand over करके तब जाए, and creates unnecessary pressure. Create your own order. Forget about what you gave in the application form. तुम्हारे अगर 2, 3, 4 पेपर हैं, तुम जिस पेपर में सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हो, जिसमें ज्यादा स्कोर कर सकते हो, वो पेपर पहले अटेम्प्ट करो. You have the right to select. That is the best part about this exam. NTA ने एटलीस्ट एक काम अच्छा जो किया है among all this कि स्टूडेंट्स के पास ऑप्शन है, ड्रॉप डाउन से वो सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट वो पहले अपीयर करना चाहते हैं. भले ही वहां पे ऑर्डर कुछ भी हो, आप चाहो तो पहला पेपर जो स्ट्रॉन्गेस्ट हो वो करो, और लास्ट में जो रखना चाहते हो वो रखो. सो दिस इज योर कॉल. सो दैट इज व्हाट यू शुड टेक केयर ऑफ. बट यस, आई वुड से जिनके एग्जाम अभी थोड़े भी डिले हैं, 8, 9, 10, 11th या उसके बाद है, राखी के बाद है, या इंडिपेंडेंस डे के बाद है, एनसीईआरटी बहुत ही अच्छे से कवर कर लो, वर्ड बाय वर्ड. बिलीव मी, यू विल नॉट मिस आउट ऑन एनी क्वेश्चन. एनसीईआरटी पे फोकस मेंटेन करो फॉर द डोमेन सब्जेक्ट्स. दैट्स गुड इनफ टू स्कोर 200 आउट ऑफ 200. दैट्स इट. फॉर जीटी, डोंट लूज हार्ट. समय दो, आराम से करो, बिल्कुल हो जाएगा. आज चेंज था, 5 क्वेश्चंस आए थे जीके में, यूजुअली 25 आ रहे थे. आज न्यूमेरिकल एबिलिटी ज्यादा था, तो दैट कुड बी अ सरप्राइज. बट जितने भी लैंग्वेज पेपर हैं उसमें 15 क्वेश्चंस कॉम्प्रिहेंशन के हैं.
डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, पैसेज आराम से पढ़ो. द ओनली थिंग विच कैन बॉदर यू इज कि पैसेजेस एक जगह पे नहीं है, तो एक ही पैसेज के 5 क्वेश्चन 5 जगह पे हैं, ऑर्डर में नहीं है, तो दैट कुड ओनली बॉदर यू, अदरवाइज एवरीथिंग इज ओके. Yes, they have not released admit card even today, at least as of now, hopefully by night, or otherwise tomorrow they'll be releasing the admit card unless something is already brewing up. So for those who are set to appear for the exam, those who are given the dates of 7th and onwards, just wait for a couple of more hours. Maybe tomorrow morning you'll have the admit card available on the website. Thank you so much, sir. It is quite helpful for everyone, who is about to appear for the examination. And again, just to add on to the Delhi University thing, we have been, constantly telling all the students that boards are important. Boards are still important. You have been saying it from, very, very starting. And this kind of, this is again, we are coming back to that only, the board thing, if there is a tiebreaker. So those students, who probably be appearing next year, who are into your, who are watching right now, just make sure that boards are important. That is why at Career Launcher also, whenever we prepare you for CUET, we also prepare you for boards. Yeah. Okay. So, So Himanshu, so before we wind up, just two questions I would sure. like to take. What about PG courses? Nikhil is asking. Nikhil, the PG exams are starting from 1st of September, not right now. So the dates have been released. The exact dates for you would be released at a later stage when the admit cards comes out. But the PG CUT PG starts on 1st of September. That's an update. The second is it beneficial to give consent about the exam on 10th of August? You should actually don't delay too much. Try to finish it as early as possible. बहुत ज़्यादा डिले करने की भी कोशिश नहीं करनी चाहिए. तो आप अगर कंफर्टेबल हो तो आप एग्जाम दो. अगर आपके पास वो ऑप्शन है, if for any chance they have given you that. So that would be all. Over to you, Himanshu. Yeah, sure, sir. I guess we have covered all the questions. So thank you so much, Amiten sir, and thank you so much everyone who is watching. We'll be coming again tomorrow, 8 o'clock. Hopefully, if there is no glitch tomorrow again. So we'll be coming back again 8 o'clock with the analysis of tomorrow's CUET. Thank you so much. All the best, everyone who is yet to give the examination. Thanks everyone, and thank you, Himanshu. Thank you so much. Thank you everyone, and all the best to you.